Okay, so what is front end? If you have heard of front end development, so you might be wondering what is this front end development? And if you're a beginner, you want to start from scratch, you will be thinking, what is this front end? अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो या आपने फर्स्ट टाइम सुना है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना चाहिए, तो फ्रंट एंड होता क्या है, इसमें क्या क्या रोड मैप्स है, क्या क्या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है। तो आज मैं ये आप लोग को बताने वाला हूँ कि what is the different areas in the front end development which you can pursue, and what is the future scope. And even if you want to become a full stack developer or a like complete developer, you can definitely start your career with the front end, and then you can move to other sides. Like if tomorrow you want to become a full stack developer or an entire developer who can do end to end development, you can do that thing. तो ऐसा नहीं है कि आपने फ्रंट एंड से स्टार्ट किया तो यू आपको फ्रंट एंड पे रहना पड़ेगा लाइफ भर, ऐसा कुछ नहीं है. आफ्टर स्टार्टिंग योर कैरियर इन फ्रंट एंड, you can switch to back end, you can switch to some other things in the future. But why does I recommend people to learn front end? लोगों को क्यों बोलता हूँ कि जाओ फ्रंट एंड सीखो? बिकॉज फ्रंट एंड सीखना कंपेरेटिवली इजी है बाकी टेक्नोलॉजी से, एंड देयर इज अ वेरी गुड डिमांड ऑफ जॉब्स आउट देयर. तो अगर आप फ्रंट एंड सीखते हो तो देयर इज गुड चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब, because there are various different what I can say areas of front end. There's no not a single one technology in front end. There's a lot of things we can do in front end development, uh, so that you can you can find out some job in the market. तो ये बहुत important point है जो मैं, because I have seen this thing in people are learning Python, Java and else things, or some everybody is learning some few skills. तो क्या होता है कि you what happens, the competition gets concentrated. अभी सब कोई एक ही skills पढ़ेगा तो job मिलना difficult हो जाएगा, and then your effort with might not work out. So if you want that मैंने अगर effort डाला तो उसका results भी आए and the chances should increase. So front end is a very good what I say area where you can explore. So I'm going to I've made some pointers that if you are starting from beginners, what you should do. So let me share my screen now, and yeah, just bear for me for what I can say. Uh, Not more than I will say 10 to 15 minutes. Okay, I will not make this video too long, and I will try to finish keep giving you the main important points. जो भी main important points है वो cover करेंगे and we'll stop. So first of all, फ्रंट एंड तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है. अब फ्रंट एंड का मीनिंग क्या होता है? सपोज यू आर ओपनिंग अ वेबसाइट, ठीक है. व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ योर आईज इज द फ्रंट एंड. उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस. यूआई मींस यूजर इंटरफेस. यू स्टैंड फॉर यूजर, आई फॉर इंटरफेस. सो यूआई डेवलपर, अगर आपने सुना होगा यूआई डेवलपर, यूआई डिजाइनर. तो व्हाट इज यूआई? यूआई इज द थिंग व्हिच यू सी फ्रॉम योर आईज, जो हम अपने आंखों से देखते हैं, है ना. अगर हम एक मोबाइल ऐप देख रहे हैं तो मोबाइल ऐप पे भी अगर आपने ऐप इंस्टॉल किया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर ऐप आपने इंस्टॉल किया, तो आप जो देख रहे हो अपने आंखों से, दैट इज द फ्रंट एंड. ठीक है, आपने कोई बटन पर क्लिक किया, किसी पिक्चर पे क्लिक किया, एंड किसी पर्सन का प्रोफाइल पे क्लिक किया, एंड फिर वो नया प्रोफाइल खुलता है. तो वो जो डेटा लाता है वो कहीं और से लाता है, उसको हम बैक एंड बोलते हैं. लाइक इट इज वो डेटा कहीं और से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द सर्वर. But what you see in front of your eyes is very much the front end or the UI. Okay. So now what has happened that now we have two kinds of developer. One is the front end developer, one is the back end developer. So front end developer develops the UI. Okay. इसमें भी दो पार्ट है. One is the UI designer and one is the UI developer. So designer is more focused on look and feel, like the UI should look good, alignment अच्छे से होना चाहिए, and all those things. And developer is is more working on the functionality. If you click on a button, what should happen? Okay, so that is like more programming आता है वहाँ पर, logic आता है. तो वहाँ पर आपका फ्रंट एंड डेवलपर मतलब फ्रंट एंड डेवलपर आ गया. दैट इज द रोल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर टू राइट
एंड उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होता है वो आपको पता होगा, मैं बताऊंगा, वो है जावास्क्रिप्ट फॉर एनी वेबसाइट। इवन मोबाइल एप्स में वी हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। मोबाइल एप्स के लिए ऑल्सो यू कैन यूज HTML एंड जावास्क्रिप्ट, प्लस देयर सम अदर टेक्निक्स, वो भी आता है उसमें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यूआई क्या होता है? यूआई इज नथिंग बट आप जो वेबसाइट्स देखते हो, जो एप्स देखते हो, जो आपके कंप्यूटर पे टीम्स इंस्टॉल होता है, जूम इंस्टॉल करते हो, जो भी आप देखते हो आपके आंख के सामने, वट एवर यू सी इन फ्रंट ऑफ योर आइज इज द यूआई, यूजर इंटरफेस। किसी ने तो वो डिजाइन किया होगा। तो वो जो जॉब है जिसने डिजाइन किया होगा, उसको कुछ तो उसने उसमें प्रोग्रामिंग किया होगा, कोडिंग किया होगा, दैट इज द रोल ऑफ फ्रंट एंड डिजाइनर, और यू कैन से यूआई डिजाइनर और यूआई डेवलपर। Okay, now let's move to next slide. So basically, again, to reiterate, उसमें क्या क्या different skills you have to learn. So first of all, the very एक website बनाने के लिए the main important thing, the most important thing is to learn HTML. HTML से एक website बनता है, ठीक है? That we can say that is the language of UI. अगर आपको HTML नहीं आता, you can't understand how to make a website, then you can't be a front-end developer. So you must know basic HTML तो आना ही चाहिए आपको, and that is a must. Now, as using HTML, you can develop both mobile applications and web applications, or we can say websites plus mobile apps. I'm not talking about mobile website. Mobile website common होता है. अगर suppose you open google.com on your mobile browser or you open in your desktop or laptop, वो more or less same ही दिखता है, ठीक है? वेबसाइट तो सेम ही होता है दोनों पे, बट मोबाइल ऐप का जब हम बात करते हैं, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंस. बट nowadays the HTML is also used to develop mobile apps. So that is the power of HTML. So if you know HTML, you can develop also the UI of a mobile app. You just using HTML. और भी टेक्निक्स होते हैं टू डिजाइन मोबाइल एप्स, बट वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट if you just know HTML, that is also good enough to develop the UI of a mobile app. आपको मोबाइल ऐप डिजाइन करना है, डेवलप करना है, यूजिंग HTML वेरी मच यू कैन डिजाइन एंड डेवलप द UI और द यूजर इंटरफेस. जो लुक एंड फील है, बटन है, पिक्चर जो भी दिखेगा, अब यू कैन डिजाइन. एंड जावास्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज, लाइक इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना. कोई भी फ्रंट एंड होगा तो उसमें प्रोग्रामिंग लगता है, ठीक है? लाइक when you click on a button of a mobile app, so what happens? Okay, suppose you open Facebook में आप जाते हो, आप किसी लाइक बटन पे क्लिक करते हो, तो लाइक बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा? व्हाट विल हैपन? समथिंग विल हैपन, करेक्ट? So that all these things is happening behind the scene, and JavaScript will is is used to manipulate the UI, or we can say it is used to uh, the UI which you see, the user interface which you see in front of your eyes is manipulated using JavaScript. मतलब कि अगर आपने what I can say, let's suppose Instagram पे आप करते हो, आप बोलते हो कि अच्छा I want to see more photos, you scroll down, okay, you want to add some comment, आपने comment add किया, you hit a save button, ठीक है, or whatever. So वो जो logic, like the programming logic of that thing, that how that it works, that logic is written in JavaScript. So if you want to become a front-end developer, then JavaScript is a must. अगर आपको सिर्फ डिजाइनिंग तक कंसंट्रेट करना है कि अच्छा मुझे आई डोंट वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, आई जस्ट वांट टू डिजाइन द लुक एंड फील यूआई, तो डिजाइनिंग के लिए HTML इज गुड इनफ. बट इफ यू वांट मोर, लाइक यू वांट टू like learn more, and you can, if you want to manipulate the UI, then you have to learn JavaScript. Okay, that is the role of the front-end developer. Now, एक simple scenario just for people who don't understand how web applications work. Now, देखो कोई भी वेबसाइट होता है उसमें HTML रहता है, जावास्क्रिप्ट रहता है. तो ये जावास्क्रिप्ट, HTML और जावास्क्रिप्ट कहाँ से आता है? एक वेब सर्वर बोलते हैं, दैट इज द सोर्स. ओके, सोर्स है. और ये जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, सपोज आई गो एंड ओपन अ google.com और एनी website.com, सो वो वेब सर्वर से क्या लेके आता है? HTML और जावास्क्रिप्ट. और ब्राउजर को क्या देता है? HTML प्लस जावास्क्रिप्ट. और फिर वो ब्राउजर उसको डिस्प्ले करता है. ठीक है, अभी थोड़ा एडवांस, बट अभी डोंट फोकस ऑन दिस थिंग, बट एज आई एम गिविंग यू द एग्जांपल. मोबाइल ऐप में भी यही होगा. मोबाइल ऐप में भी HTML होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, नॉट एवरीथिंग, बट दोज मोबाइल ऐप व्हिच आर डेवलप्ड यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट, दोज मोबाइल ऐप्स में वही होगा, वो वहां से आएगा, फिर मोबाइल ऐप में वो दिख जाता है.
this is how it works. Okay. Now, if you're a beginner, what should be your roadmap? Like आपको क्या क्या सीखना चाहिए और what how much is enough? Like अच्छा यहाँ तक सीख लिया तो is good enough. So इसका it depends. Now it depends on your interest. It depends on your likings. So a lot of things are there. Let me go one by one. So सबसे basics तो है कि HTML आपको आना चाहिए. प्लस CSS इज नथिंग बट स्टाइलिंग. लाइक HTML में आपको बटन का कलर रेड करना है, आपको बटन छोटा बड़ा करना है, फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, कम करना है. ये तो स्टाइलिंग है, लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट. अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कलर बैकग्राउंड कलर चेंज करो, ठीक है, अलाइनमेंट प्रॉपर है कि नहीं, वट एवर. सो वो जो बनता है यू दैट इज CSS इज इन्वॉल्व, लाइक स्टाइलिंग बोलते हैं इसको. तो वो आपको आना चाहिए. अगर आप बेसिक्स तो आना चाहिए. अगर आपको UI डिजाइनर बनना है कि वांट ओके मेरा जॉब सिर्फ इज लिमिटेड टू डिजाइनिंग अ गुड UI, अच्छा लिख दिखे, एनीबॉडी विल बी इम्प्रेस्ड बाय लुकिंग एट द UI, तो फिर यू हैव टू लर्न एडवांस CSS. CSS में भी आपको को एडवांस है ना, बिकॉज बिकॉज दैट इज योर जॉब टू डिजाइन गुड वेबसाइट्स. तो आपको स्टाइलिंग में और एडवांस में घुसना पड़ेगा एंड यू गो डीप इन दैट. So if some and there are lot of jobs in UI designer if you want that. Okay. Now coming to next thing कि अगर suppose आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, suppose you don't like programming that much, but you are interested in becoming a web developer, आप वेबसाइट्स बनाना पसंद करते हो, you want to develop websites using HTML and CSS, what else you can learn to raise your job prospect? आप ऐसा क्या चीज सीख सकते हो जिससे आपको जॉब के चांसेस बढ़ जाए. अगर आपको कोडिंग नहीं आता, मैंने यहाँ लिखा है नो कोड, ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है, ठीक है, बहुत सिंपल है. आप सीखो, बहुत सारा फ्रेमवर्क्स आता है विच इज यूज्ड टू मेक वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स. लाइक वर्डप्रेस इज वेरी पॉपुलर टू मेक वेबसाइट्स, Shopify is very popular to make e-commerce websites, Magento is also popular to make websites. तो ये PHP फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसमें you don't have to learn programming. These are all PHP based, but you don't have to learn PHP. Okay, अगर आपको HTML आता है, बेसिक CSS आता है, a little bit of JavaScript basics, not very advanced, very basics अगर आता है तो is more than enough, more than enough. But mostly you have to HTML and CSS आपको आना चाहिए, and that is very like good jobs out there. So you explore that. I'm just giving you the roadmap. If you're a UI designer, uh, if you want to increase the job chances, you can also look and on those frameworks जहाँ आप वेब डेवलपर ही रहोगे and you don't have to learn the coding, you don't have to learn JavaScript or whatever. आप सिर्फ फोकस करोगे डिजाइनिंग में, but at the same time you can also learn WordPress and all those things to add more skills on your resume, जिससे आपको चांसेस बढ़ेगा जॉब मिलने का. सिंपल है, ठीक है. सपोज वो एक पाथ हो गया. दूसरा पाथ है कि इफ यू लाइक प्रोग्रामिंग, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि अच्छा आई कैन लर्न प्रोग्रामिंग कोडिंग, योर लॉजिक इज गुड, एबिलिटी, तो यूआई डेवलपर इज आल्सो वेरी गुड कैरियर. यूआई डेवलपर और यूआई डिजाइनर में डिफरेंस वही बताया था कि यूआई डिजाइनर का काम है लुक एंड फील बताना कि अच्छा लुक अच्छा दिख रहा है, उसका अलाइनमेंट प्रॉपर है. और यूआई डेवलपर का काम क्या है कि बटन पे क्लिक किया तो क्या क्या लॉजिक रन होगा, है ना. बटन पे किसी क्लिक किया तो कोई चीज हाइड होगा, कोई चीज शो होगा, कोई पॉपअप होगा. अगर आपने कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाके आपने एंटर किया वैल्यूज की, अच्छा माय ईमेल एड्रेस इज दिस, माय फोन नंबर इज दिस, एंड आपने एंटर मारा, तो फिर वो लॉजिक रन करेगा कि आपका जो फोन नंबर है वो वैलिड है कि नहीं. अगर आपने फोन नंबर डाल दिया ABCD, ABCD को किसी का फोन नंबर पॉसिबल नहीं है. तो ABC, so that logic that ABCD is not a valid one. Okay, that logic is like run by JavaScript on the front end. तो आपको वो डेवलपर बनना है तो you qualify as a UI developer. Okay, now but nowadays क्या हो गया है कि that is like a starting point of a UI developer. अगर आप सिर्फ JavaScript जानते हो, maybe that will not be enough to become a UI developer, because nowadays अभी नया नया advanced we can say technologies and frameworks आया market में, like Angular है market में, React है market में, वो आपको सीखना पड़ेगा. If you want to get a job as UI developer, you have to learn React JS or Angular. ठीक है, ये this is pretty like this is the most two popular framework which is used
for UI development. ठीक है, तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा, either of these things. I have written more two frameworks which people are not much aware of, but these two also quietly used in the market. Like एक Vue.js करके है, and फिर Backbone.js करके भी एक market में है. Now Vue.js and Backbone मैंने क्यों लिखा है? Because see, most of people will be learning React and Angular. Because the jobs are there, obviously jobs are there, but some jobs are still in Backbone, some jobs are still in Vue. So you can also, instead of learning React.js, some people can learn Vue and some people can learn Backbone. Because if you do that thing, you will also have less competition. There are less job, but the competition will be also less. तो ये आप खुद से एक्सप्लोर करो. You go to job portals, देखो कितने jobs है कितने. So you might have an advantage if you learn Vue and Backbone. You might have a disadvantage. इसलिए बोलता हूँ कि कोई चीज का दो, don't have what I will say, don't look for a quick solution कि अच्छा मुझे एक सर बता दो एक टेक्निक में वही पढ़ता हूँ, मैं वो बताऊंगा तो everybody will learn that. आप देखो कि आपका क्या strong abilities है, what is, उसका अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि मैं मुझे एंगुलर सीखना चाहिए या रिएक्ट, या मुझे बैकबोन और व्यू सीखना चाहिए, व्हाट आई, तो ये आपको ऊपर है. Suppose you want to become a UI developer, but not a website developer. You want to become a mobile UI developer. मोबाइल में भी UI होता है. तो ये जो UI डेवलपर मैं बोल रहा हूँ, दिस इज वेबसाइट UI डेवलपर. और अगर आपको मोबाइल UI डेवलपर बनना है, मतलब वो UI बट मोबाइल का, मोबाइल एप्स का, उसके लिए दो पॉपुलर, वेरी मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क आर React Native and Ionic. Okay, one more is there, but I've not written that name. React Native and Ionic, why I've written? Because these two are very famous and very much in demand. काफी jobs है इसमें, and you what you have to learn is only JavaScript, and then you can learn this framework. This is all based on HTML and JavaScript, and then you can learn the React Native technology. So this is the advantage of learning React Native. You can develop iOS apps, you can develop your Android apps using React Native and Ionic. And one more is there, which is I've not mentioned here. एक Flutter करके भी आता है to develop mobile apps, but HTML से नहीं बनता है, उसके लिए you have to learn some different technologies. So HTML का use करके you can use React Native, Ionic, develop mobile apps. Similarly, PhoneGap technology, you explore more on that thing. If you just know HTML, CSS, using that also you can develop without using React Native and Ionic, you can develop mobile app using PhoneGap. तो वो भी आप explore करो क्या है. So I'm trying to give you various like what are the different areas which you can explore. Okay. Now last is कि अगर हम, ये मेरा लैपटॉप है ना, in this my laptop some app is installed like Teams is installed or something. तो that is not a mobile app, this is a desktop app. तो desktop app use में अगर आपको develop करना है, for that also you can use HTML also nowadays. And for that a very popular framework is Electron.js. Both people don't have the name. So Electron.js is used to develop desktop and laptop based apps. Okay. So what I'm trying to make it clear that if you know HTML and CSS and JavaScript, then you have the prerequisite to explore a lot of things. You can explore React Angular, you can explore Backbone View, you can explore React Native, Ionic, you can explore Electron.js. तो मेरा वही कहना है कि आपको ठीक है वो आगे जाके क्या करना है, इट्स फाइन, बट अगर आपको फ्रंट एंड पे भी कैरियर बनाना है तो इट्स नॉट लाइक एवरीबॉडी हैज टू लर्न एंगुलर, everybody has to learn React. You can choose other things also. If you're not so much interested in programming, आपको programming थोड़ा hard लगता है, then you can go for WordPress, Shopify, Magento. These are also good. इसमें उतना programming involved भी नहीं है. And if you like to design UI but not too much programming, these are very good. WordPress देखो, Shopify देखो, so Magento देखो. So always avenues are there. मतलब market में always there is a scope for every person. आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप उस पर वर्क करो, एंड यू शुड नॉट कंपेयर कि अच्छा वो कर रहा है तो मैं वही करूंगा. इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज सपोज आई एम नॉट गुड इन डिजाइनिंग एंड देन आई विल से अच्छा वो यूआई डिजाइनर is getting so and so working so and so company getting business back. It's not fair, no, because that person is good in designing. I might be good in some programming, somebody might be good in something else. सबका स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिफरेंट होता है. वी हैव टू डू अ सेल्फ असेसमेंट कि हम किस में अच्छे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वो करो. Now this is yeah this so finally I'm going to launch my own course for
I will say beginner plus advanced, everything. Because I think there's a need of a course which uh, people has not got. Like I see that thing, that people are not telling you the entire thing about front end, even anything front end le lo, back end le lo, kuch bhi le lo. I see there's a like there's a gap. A lot of people are launching their own course anyway, but I see a gap. So I thought I also can launch my own course and see how people like it. So I'm going to launch very soon, and maybe this week you will see this the HTML from. I will start from the basics. तो आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा. Right from basic HTML से लेकर CSS. I will not go into CSS advanced as of now. So I'm focusing on a UI developer course based on React. तो उसके लिए बेसिक है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको रिएक्ट ही करना है. इफ यू वांट टू डू एंगुलर, you can do first, second, third, and fourth and fifth point. Till fifth point, you cover everything except React.js. Then you can learn Angular on your own. It's not like that. Even if I'm not teaching. If you want to do mobile app, that also you can do. But I will say you should focus on the basics like HTML क्या है, CSS क्या है, JavaScript क्या है, how we can use JavaScript to manipulate HTML. That is the main use of JavaScript. ना? कि JavaScript का use क्या होता है? To manipulate UI. UI is what? HTML. कैसे manipulate करते हैं? एक बटन पे क्लिक किया तो कोई किसी मुझे हाइड करना है, to शो करना है, कैसे करते हैं? How to change the color on click of a button. So it's very interesting. You should learn this thing. This is the basic of anything. And then advanced JavaScript is used generally if you're learning advanced framework like React or Angular. So if पढ़ो तो it's good for you. If you don't want, it's okay. Like if you're doing something else, some other framework like Ionic, you might not need this thing. But it depends. But at least the first four parts is very important for everybody. If somebody is not interested in programming, they can skip JavaScript and all those things. HTML कर लो, CSS कर लो. Maybe in future I will launch an advanced CSS course only for UI designer. But as of now, in coming months, I will first launch a course of my own. जिसमें मुझे those strong points, I know those things. I'll focus on that thing to become a proper developer, UI developer, and front end developer. But start with the basics. आपको help होगा. And this course may obviously I will be on YouTube because I'm making it for first time, and I will post the assignments on GitHub, and definitely I will give you the project IDs because project is very important. Because what I see people are doing very small projects. That is not a project. So even I can't give you like projects. I can give you mini projects, like not small projects. This is possible because you can't do a project in just 15 days or 1 month. It takes at least 3 months to 6 months to do a project. Many times you don't have that much time. तो हम आपको mini project से, but the task which I will give you will be complex, and I want you that if somebody is following my course, I want you to make industry ready at the end of the course. That आप industry में जाके भी अगर आप job ढूंढना चाहोगे, तो definitely आपको advantage if you follow my course seriously, and you can if you grasp the concept properly, then definitely that will help you to be industry ready. That is my objective of this course, because and this is just one of the courses I'm trying to launch. In future, definitely I know a lot of things. I'll launch other things also. But abhi ke liye I'm starting with the front end because a lot of people will benefit from this thing. And let's see how it goes. So yeah, so that was it. So I will stop now, and definitely we'll meet again when I come back with my HTML course very soon. You can hope within 3 to 4 days I will come to my first session, and with assignments and everything, and that will be helpful to you guys. And definitely, any feedback is open. If uh, you are liking this kind of videos, or if you're not liking it, please be open for that thing. So let's see and hope for the best. See you then. Bye. Thank you.